So friends, in this lecture we will be talking about the other gland, and that is pancreas. Now where is pancreas located? So you can see that the pancreas is located in the U-shaped loop of duodenum. Now you can see that this is a C-shape or U-shaped duodenum in which you can see this, right? This is a whole duodenum, and in which this leaf-like structure is present. That is what you call it as pancreas. So pancreas is located in the loop of duodenum, and it secretes. It has two parts basically, endocrine and exocrine. But right now we are studying hormones, so we will be just talking about one and only one part, that is endocrine part, in detail. So it secretes mainly three hormones that are really very important in glucose metabolism. The first is insulin, the next is glucagon, and the third one is somatostatin. So it mainly secretes three different hormones. So let us first talk about the anatomy. Now we can see this that this pancreas is located in a loop of duodenum. Now this is a duodenum, and over here the pancreas is located. This is a pancreatic duct. Now because of the presence of duct, it is also known as exocrine, but it also has got certain structures like endocrine part, which you call it as the islets of Langerhans. Okay, so this islets of Langerhans, if you see the transverse section of pancreas, you will find a group of cells in the center of pancreas. You can see all this group of cells, and this group of cells which is present in the center of pancreas are known as islets of Langerhans. It is mainly composed of delta cells, alpha cells, and beta cells, which is the endocrine nature. To remember that, which is the endocrine nature, islets of Langerhans is called the endocrine nature. That means what? These three cells, that is alpha, beta, and delta, will secrete hormones. What do they secrete? They will secrete hormones. So it is an endocrine nature, and they will secrete right way into the bloodstream, right? तो वो सीधा bloodstream में ये hormones को release करेंगे. और दूसरा जो part है वो है pancreatic acinis. This one, the floral like structures, you can see this on the sides, and this is called as the exocrine portion. Exocrine मतलब जो enzyme secrete करता है duct के through, उसे हम कहते हैं exocrine portion. So it is a exocrine portion. So क्योंकि pancreas में endocrine और exocrine दोनों हैं, it is known as a heterocrine gland, दोनों nature की वजह से. Now let's see in return that it has both endocrine as well as exocrine. Endocrine का मतलब होता है presence of duct, and exocrine का मतलब होता है presence of duct, एंड एंडोक्राइन का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ डक्ट, मतलब हॉर्मोन्स भी रिलीज करना और एंजाइम्स भी रिलीज करना. अभी जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो पैनक्रियाटिक एसाइनीज का बना है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है. Okay, and these digestive enzymes are released into the duodenum through the pancreatic duct. लेकिन जब हम एंडोक्राइन पार्ट की बात करें, ये चैप्टर के रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ओनली 1 to 2% ऑफ पैनक्रियाटिक टिश्यू है. हाउ मच इट इज? पूरा पैनक्रियाज में ओनली 1 to 2% इज द एंडोक्राइन पार्ट, विच कंसिस्ट ऑफ 1 to 2 million islets of Langerhans. एंड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो सेंट्रली लोकेटेड सेल है, जो अल्फा सेल्स जो 25% बनाता है, बीटा सेल्स जो 60% बनाता है, एंड डेल्टा सेल्स जो 10% बनाता है. इट इज कंपोज्ड ऑफ दिस. सो दिस 3 points आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अल्फा सेल्स विल प्रोड्यूस ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स विल प्रोड्यूस इंसुलिन, and the delta cells will produce the somatostatin. Okay, it will produce somatostatin. So you have to remember these 3 main points in this. Let's see. Now you can see that these 3 things, the centrally located cells, as I have told you that it is known as islets of Langerhans.
right? And it consists of alpha cells, beta cells and delta cells. Now alpha cell secretes a hormone I have written here, it is known as a glucagon. All are peptide nature hormone, मतलब प्रोटीन से बने हुए हैं. They increases the blood glucose level. Insulin, it decreases the blood glucose level secreted by the beta cells. And somatostatin is released by the delta cells, जो ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों का ही सिक्रीशन ब्लॉक करता है. रिमेंबर, मतलब सोमैटोस्टैटिन वो हार्मोन है जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को रेगुलेट करता है. Now let's start with the first, that is glucagon. तो glucagon कौन रिलीज करता है? It is released by the alpha cells. Okay, and glucagon is called as hyperglycemic hormone. Hyper, more, glycemia, glucose को बढ़ाने वाला. So I've written right below it that it increases the blood glucose level by two main processes. This is important again, glycogenolysis, and the second process is known as gluconeogenesis. Now if you see this word, you will get two words from this. Glyco, that is glycogen. Okay, glycogen, that means what? Lysis, breakdown. तो ये क्या करेगा? ग्लाइकोजन को ब्रेक करके किस में कन्वर्ट कर देगा? इट विल कन्वर्ट इट इनटू द ग्लूकोज. ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये ग्लूकोज सीधा चला जाता है ब्लड स्ट्रीम में और इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल. ओके, देन द नेक्स्ट इज ग्लूकोनियोजिनेसिस. जिनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, नियो मतलब कुछ नया और ग्लूकोज कुछ नए टाइप का ग्लूकोज बनना. तो ये है, इसकी डेफिनेशन है कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज लाइक फैट्स एंड प्रोटीन्स. ठीक है, तो अगर ग्लूकोज फैट्स और प्रोटीन्स में से बन रहा है तो वो कौन बनाता है? ग्लूकागॉन. अल्टीमेटली ये जो ग्लूकोज है ये वापस इंक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर. ठीक है, इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन. मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ना ब्लड के अंदर, ये फंक्शन किसका है? ग्लूकागॉन का है. ठीक है, अब जैसे कि अगर हम कोई सिचुएशन में स्टार्विंग है या फिर हम फास्टिंग है, ठीक है, सपोज लेट्स से कि फास्टिंग कंडीशंस है, तो उस फास्टिंग कंडीशंस में ये ग्लूकागॉन हमें हेल्प करता है क्योंकि बॉडी में फैट्स वगैरह स्टोर्ड है या फिर हम कहें कि प्रोटीन स्टोर है, तो उसको वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमें फूड सप्लाई देगा. सो दिस इज अबाउट ग्लूकागॉन हार्मोन. Now next we'll talk about the beta cells that secrete a hormone called insulin. Insulin is a hypo मतलब किसी चीज को कम करना, डिक्रीज करना. ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज इन ब्लड. तो ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है क्योंकि it decreases the blood glucose level in the blood. Okay, दो प्रोसेस से अगेन. वन इज ग्लाइकोजिनेसिस. आई टोल्ड यू जिनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन और ग्लाइको का मतलब होता है ग्लाइकोजन. तो ग्लाइकोजिनेसिस मतलब क्या? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज. तो देखो यहाँ पे मैंने एरो में लिखा है, अगर ग्लूकोज ब्लड में बढ़ गया और वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा और ये ग्लाइकोजन फिर स्टोर हो जाता है लिवर एंड मसल्स में. अल्टीमेटली ग्लूकोज का लेवल क्या हुआ? कम हुआ. नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फैट्स एंड प्रोटीन्स. अगेन, जितना भी एक्सेस ग्लूकोज है ग्लाइकोजन बनने के बाद, ये फर्स्ट प्रोसेस होने के बाद इंसुलिन क्या करेगा? फिर वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा फैट्स और प्रोटीन्स में एंड अगेन वो फिर वापस स्टोर हो जाते हैं कहाँ? लिवर और मसल्स में. तो अल्टीमेटली इंसुलिन जो है वो ब्लड का ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है. रिमेंबर दैट, इट डिक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल. सो ओनली हम इसे हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं. नेक्स्ट, लेट्स से अगर
कि लेट्स से कि देर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, मतलब क्या है कि बॉडी में इंसुलिन कम रिलीज हो रहा है, तो उसकी वजह से जो कंडीशन बनती है दैट इज यू कॉल इट एज डायबिटीज मेलिटस। व्हाट डू यू कॉल इट एज? डायबिटीज मेलिटस। अब यहाँ पे मैं आपको एक नोट करने के लिए कहूंगी, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन डायबिटीज मेलिटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस, दोनों ही डिफरेंट है। इंसिपिडस एडीएच की डेफिशिएंसी से होता है और मेलिटस इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होता है। तो प्लीज राइट डाउन द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ओवर हियर। ओके, इसमें ब्लड ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव थर्स्ट, यूरिन और हंगर जैसी सिचुएशंस आ सकती है। अगर किसी को ब्लड शुगर है तो वो हार्ट, किडनी जैसे वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, और कीटोन बॉडीज यूरिन में एक्यूमुलेट हो जाती है, जिस कंडीशन को हम कहते हैं कीटोनूरिया। So ultimately this is all about the insulin. Now the next hormone we are going to talk about is the delta cell that is secreting a hormone called somatostatin. और as I told you कि ये जो somatostatin है ये भी प्रोटीन नेचर का ही हार्मोन है, और ये ब्लॉक करता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन को। दैट मीन्स व्हाट, अल्फा और बीटा सेल्स को वो रेगुलेट करता है, उसका सिक्रीशन वो रेगुलेट करता है। ओके, सो इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड सोमैटोस्टैटिन टुगेदर, तीनों मिलके क्या करते हैं, कितना न्यूट्रिएंट को फ्लो देना है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, दैट हैज बीन कंट्रोल्ड बाय सोमैटोस्टैटिन। So in the next lecture we will be doing gonads, that is testes and ovaries in detail.